Good morning, students. Today we are going to learn about chapter number 5, Human Elements. Okay, you have to look textbook first. Open your textbook, chapter number 5. Okay, so we are going to start with our first slide. In your textbook, read the descriptions and choose the correct option from the text, the help box to fill in the blanks. Read the description and choose the correct option from the help box to fill in the blanks. Okay, look at the first filling the blanks. First one is, this is a viral disease that causes inflammations of the liver. Currently, there is no vaccine for this disease. Authors efforts to create one are on. Okay, so first this is your first question. ये वो बीमारी है जिसमें लीवर पे सूजन आ जाती है और इसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हेपेटाइटिस. ओके, सो व्हाट इज अ हेपेटाइटिस? लुक एट द पिक्चर. सो दिस इज अ हेपेटाइटिस disease pictures. In our liver, these types of viral disease are couched in inflammation of the liver. Okay, okay, now let's move to slide number 2. The question number 2. This gland secretes insulin that control blood sugar level. A deficiency of insulin can result in diabetes. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड इंसुलिन्स है. ओके, अगर वो कंट्रोल नहीं रहता तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? शुगर की. एंड यू हैव टू सफरिंग विथ डायबिटीज ऑल्सो. ओके, सो आंसर इज pancreas. Okay, so answer is pancreas. But what is a pancreas? Okay, now look at the picture. This is a pancreas. A gland secretes insulin in your yellow form. If you are not controlling this, that you have to suffering a sugar level, blood sugar, or a diabetes. Okay, now let's move to slide number 3. Question number 3. The deficiencies of these nutrients makes bones soft and porous. Yes, question number 3. Deficiencies of these nutrients makes bones soft and porous. ऐसे कौन से पोषक तत्व है जिसकी कमी की वजह से हमारी हड्डियां मुलायम हो जाती है और उनके अंदर न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम होती है? सो वो कौन सा विटामिन है? ओके, सो योर आंसर इज
vitamin D. Okay, just look at the picture. This picture defined you to nutrition makes bones soft and pores. Okay, now let's move to slide number 4. Question number 4. This is a dense cloudy area formed in the lens of the eye that leads to a decrease in vision. कौन सा ऐसा रोग है जिसकी वजह से हमारी आँख के ऊपर एक क्लाउड जम जाता है और जिसकी वजह से हमारा विज़न, देखने की शक्ति या देखने का एक ज़रिया जो कम होने लगता है, ऐसा कौन सा रोग है? ओके, सो योर आंसर इज cataracts. So what is a cataracts? Yes, look at the picture. You have to see a cloudy area formed in the lens. Yes, and that's why if you are suffering in this issue, you have to decrease your visibility also. Okay, now let's move to next slide. Question number 5. This infection disease beings as a red rash on the face and neck. It is caused by a virus. ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वजह से हमें रेड रैशेस होते हैं फेस पे या फिर नेक पे? सो वो वायरस का नाम क्या है? यस, सो योर आंसर इज measles. Measles. Look at the picture. Basically, you have to see a red rashes on face and neck also. Measles suffering to these type of rashes in your body. Okay, now let's move to slide number 6. Question number 6. This viral disease is spread by mosquitoes. ऐसा कौन सा रोग है जो मस्कीटोज की वजह से वायरल होता है? यस, सो योर आंसर इज डेंगू. लुक एट द पिक्चर. दिस इज अ मस्कीटोज ऑफ डेंगू. So children, this is your chapter number 5, human elements. Okay, we will learn our next chapter in next video. Okay, thank you, have a nice day.